हाय गाइस ललित सार केमती अछंती आपण माने तो इंटरव्यू हवा को जाउची 6 तारीख रु ओएस इंटरव्यू हवा को जाउची ता पई जो मानकर सोशियोलॉजी ऑप्शनल जहाँ मो पाखरे इन्फॉर्मेशन अछि परहैप्स मोस्ट जोंडे की स्टूडेंट जी की सोशियोलॉजी ऑप्शनल देइथिले टेस्ट जହାର हेइची सी भी फॉलो करंतु एवं जार न होईची भी सी एई प्रोसेस को फॉलो करंतु कि एई एरिया को एबेठु पढ़ारे टच रे रहिथिबे काहे सेथिरे मेंस रे भी आपन हेल्प हबो एंड एज वेल एज आपन इंटरव्यू आगु को ऑटोमेटिक हेल्प हेई तो एटी समस्त पिला पई पाखापाखि मु सुनिथिली कि 800 पाखापाखि पिला मेंस देइथिले जो मानकर सो बेसिकली मेजॉरिटी पिला जोंटा कि सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेशन एटा जे ऑप्शनल एज वेल एज जो माने इंटरव्यू दउचंदी खास करके तांको पई तो पूरा एबे समय नाही जो माने इंटरव्यू दउ नाहांती तांको पई भी ये काम रे आसीबो कोनकिना आगो को से माने इंटरव्यू देबे मेंस प्रिपेयर करिवे तो जेते प्रिपरेशन करिवे जेते ऑप्शनल पढिवे सेतेबेले एई एरिया को जेमती टच करिवे भलो से तो ता पई ये सेशन मु आनीची तो आपन को बहुत ही कम सेशन है मु कोन ए सेशन रे कोन हबो खाली क्वेश्चंस कहबी आउ गोटे आहुरी सेशन मु आगो को आनीबी ए क्वेश्चंस रो आपन को आंसर कोन कोन देई पे सो मु आगे क्वेश्चंस कहि दउची यू कीप पंडरिंग यू ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ देन मु तारो आउ गोटे कंपाइलेशन आनीबी करे तो किसी क्वेश्चंस जोंटे कि आपन को प्रथम बोर्ड रे पसी गला परे या प्रथम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑप्शनल यदि को पचारा जाए ये हला ये जो ऑप्शन व्हाई डिड यू चूज नहीं काहे कि कोन चूज करचंती ऑप्शनल भाई कोन पई चूज कली इवन एमिति हेई पारे यू आर ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या यू आर ए साइंस ग्रेजुएट व्हाई यू चूज सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शन और ऑप्शनल काहे कि तो ये क्वेश्चंस बहुत मेजॉरिटी जगह रे ये क्वेश्चंस डिड यू गो थ्रू विथ द क्राउड कहली हाईएस्ट पिला जी की सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेंस ले तो तमाने क्राउड एंड सोशियोलॉजी रो गला थरे भी देखा जाइथिला सोशियोलॉजी रो सबुटु तो जदि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पिला सिलेक्ट होउचंती कोन जहा मेजॉरिटी फॉलो करू सेटा कोन फॉलो करूचो देन व्हाई डू यू जोंटे कि कहली मु ऑलरेडी कहि सारे तुम ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सो एंड सो फोर्थ साइंस हो या ज्योग्राफी हो या इंजीनियरिंग हो या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हो या मैथ बैकग्राउंड हो जे कोनसी बैकग्राउंड हो सोशियोलॉजी काहे कि नेलो एंड व्हाई हाउ डू यूज योर नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी देखो दीज आर द क्वेश्चंस द कंपाइलेशन जे कि बहुत सारा वर्षर एक्सपीरियंस रे बहुत वर्षर क्वेश्चंस को बेसिकली फॉलो कराई the name any three sociologists or Indian sociologists or their theories. Okay, then explain करो. तो तमाने कौन तुम्हें sociology जानिया जाएगा तंग विषय. Similarly, who is your favorite and what do you like about it? Like about his work or favorite sociologist किए कहेंगी तुम्हें तांको विषय रे बेसिकली कहीं पसंद कर रीजन कौन सेटा को भी जस्टिफाई तो बुझीगला क्वेश्चंस केमिति आसी यू नीड टू राइट इट डाउन जो माने खास करके एई वर्ष दउचंदी या दउ भी नाहंती योर प्रिपरेशन शुड बी माने बिफोर 1 year or 1.5 year बिफोर योर इंटरव्यू बिफोर योर मेंस तो लाइक वाइज प्रिपरेशन से करंतु तो जेमती ये कहली ये गुडा तुम लेख मो लेखिकी तुम प्रिपरेशन माइंड रे डेभलप कर जी जହାର एथर इंटरव्यू अच्छी सोशियोलॉजी रो तांको तो कंपलसरी दिन राती then mention couple of problems facing या current एठी ये भी पचारि पारे तुमको एठी ईशा भी पचार आप couple of problems माने बेसिकली रिलेटेड टू ताले मेरे रिलेटेड फैमिली रो
कास्ट सिस्टम रे कौन चेंज सब क्वेश्चन पचारि पारे हाउ कैन सोशियोलॉजिस्ट हेल्प इन एमिकेबल how would you explain sociology to a common man? How do you explain sociology? So why it is a scientific definition, a scientific study of society. Scientific study कौन तुम्हें केमिति कॉमन मैन को बुझे ना नहीं सोसाइटी विषय केमिति आमे जानि पारा केमिति आमे डाटा स्पेसिफिक सोसाइटी को आमे पढ़ी परिबा सोसाइटी को आमे एनालिसिस करि परिबा सोसाइटी को आमे तांको विषय रे जानि पारे कोउठी अधिका कास्ट अछि कम कास्ट अछि कास्ट बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन हो कोउठी रिलीजन बेसिस रे ये सब आमे बेसिकली सेम जे फाइंड आउट कर व्हिच मु कहबी आगु व्हिच सोशियोलॉजिस्ट थिंक इज मोस्ट रेलेवेंट इन कंटेम्पोरेरी टाइम्स व्हिच सोशियोलॉजिस्ट डू यू थिंक इज द कंटेम्पोरेरी टाइम्स एबे टाइम उपरे किए सोशियोलॉजिस्ट माने तांकर जो थिंकिंग या आइडिया एबे भी they'll mention some social problems in your cities, village, or which theories and tools from sociology can use to solve the problem. This is very very important. Social problems कौन तुम गाँव रे तुम सहर रे एंड तुम जो आसीथिबो जो लोकेशन आसीथिबो प्राय पचार देन से अनुसार तुम ताको केमिति सॉल्व करि परिबो सोशियोलॉजिकल टूल्स यूज ना चाहे वैल्यू न्यूट्रलिटी हो चाहे डरखाइम कॉन्सेप्ट हो चाहे कार्ल मार्क्स रो हो चाहे वेबर रो हो चाहे पैटर्न रो हो चाहे पार्सन्स रो हो जहाँ जो थियोरिस्ट मानकर जो प्रॉब्लम्स कहबो खाली जोटा जानी थिबो सोशल प्रॉब्लम जेतले कहबो माइंड रो ये थिबा दरकार कि मु को थिंकर कथा कहया जाउची तो तो व्यवहार उठाओ so why is the condition of women better in नॉर्थ ईस्ट रे वुमेन कंडीशन बेटर कहीं तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कौन ना मैटरनाल वर्सेस पैटर्नल अंडरस्टैंडिंग ये आसो मेन बेटर कंडीशन मेन बेसिकली से पैटर्नल सोसाइटी कही पार नॉर्थ ईस्ट तो ये क्वेश्चंस देन नेक्स्ट देयर बी ए ओल्ड एज होम कहीं क्या ये बहुत सारा बढ़ी चलती कि वायलेंस बढ़ुची पेरेंट्स को न्यूक्लियर फैमिली अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स मान को बेसिकली तो से ये क्वेश्चन तो भाभी चिंती आंसर देवा दरकार देन डू यू थिंक दे एक्ट एज एन एवेन्यू फॉर शोल्डरिंग ऑफ पेरेंट्स बाय चिल्ड्रन कौन भावुच धीरे धीरे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स मान नौथिले पिला बेले पिलांको से रेस्पॉन्सिबिलिटी ओल्ड एज रे जते बापा माँ से ओल्ड एज हो जाउछंती पिला से देन इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया ऑन द सोसाइटी ये वेरी इंपोर्टेंट एबे का हिसाब रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट को सोशल मीडिया तो ये इतने क्वेश्चंस मु जेती दउची तुम प्रिपेयर कर दियो तुम भल से भल मार्क मिल ए एरिया रो प्राय मेजॉरिटी एरिया टच है व्हाट आर द डे टू डे problems faced by transgender in society as a video what will you do to solve them ओके और एज ए तहसीलदार एज ए बीडीओ कहने तुम ये हेले ये जो बीडीओ कहीदेला ताने कौन तुम्हें बीडीओ काम कौन बीडीओ काम तहसीलदार काम ये न जानी तुम्हें ये आंसर दे डू यू थिंक इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट तार पर क्वेश्चन जदि सोशलिस्ट स्टेट चाइना भी कौन सी सोशलिस्ट या सोशलिस्ट कह यस सर सोशलिस्ट डेफिनेशन कह माननीय देन पचरा कि सर अरे चाइना भी सी देन कह कि देन डिफरेंस कौन इंडिया और चाइना भितर ओके देन कास्ट बिल्डिंग और winning in the society
एज पर द मोस्ट सोशियोलॉजी किए कहिथिबो या ऊपर सही अनुसार तुम आंसर दब कास्ट बढ़ुची या कमुची सोसाइटी आउ ए जे बढ़ुची कमुची तुम मन भावना रे कहबनी यू हैव टू टेल बेसिकली अबाउट द सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव ये किए सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑफ डेली सीरियल देखिए जो डेली सीरियल्स देख ऑन फैमिली रिलेशन इम्पोर्टेंट सोसाइटी ऊपर कौन इम्पैक्ट कर देन डू यू थिंक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ये इलेक्शन चाहे थाए सब थर ये खाली बहुत बड़ ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एक्ट एज ए हिंड्रेंस टू रिमूव रिजर्वेशन कहीं रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दिया तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कास्ट को आहरी स्ट्रॉन्ग करू इज इट राइट टाइम टू रिमूविंग रिजर्वेशन दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव तो तुम्हें भाभी चिंता यार आंसर व्हेन विल इट बी जदि रिजर्वेशन रिमूव करवा जदि केतले करवा आउ कौन एटा रिमूव करी हबो इफ यस देन हाउ ये क्वेश्चंस बड़ क्वेश्चन एंड बहुत ही हाँ तो भाभी चिंती आंसर दो मु कहबी बट ये क्वेश्चंस गुड़ा आगे लेख निजे आगे पंडरिंग कर निजे आगे भाव सर्च कर टेल मी व्हाट आर द मेजर सोशल इश्यूज शुड वुमेन गेट रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट जोटा कि गुजरेज अच्छी या कह ये सार देयर इज ए गिवेन देन से बिल विषय तुम इनफॉरमेशन रखि कलेक्ट कि इंट्रोड्यूस केबे हबो कौन हबो या तार कौन कौन कंडीशंस अच्छी केते परसेंट देन नेक्स्ट व्हाई फीमेल जेंडर इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट तार सोशियोलॉजिकल रीजन कौन फीमेल जेंडर को कहा जाए कौन पाई तार रीजन कौन देन आमे बर्तमान मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी आड़ को जाऊँ but we ended up creating society driven by economy. Intended to create economy driven by market, but we ended up creating society driven society economy. The Indian context ताको define करो. Top one. Your understanding देखो कौन जरूरी नहीं तुम सब गुड़ा जानी थी, but तुम्हें एबे टेस्ट तो करी परी. But do you understand the term secularism, secularism, communalism, Hinduism, Hinduization of religion and linguistics? Very very important terms. Huh? Fundamentalism. Fundamentalism in India, neighborhood. Why India is more or less shielded from fundamentalism? Okay, fundamentalism. Then, are working women really empowered or not? Are working women really empowered or not? It's also very very important one. Then 50 questions around तुमको दे दूँगी area touch. So, what is the reason behind spatial variation in incidence of violence? Is the reason behind spatial variation in incidence of violence against being a woman? What would you do to empower yourself? Being a woman, what you do to empower yourself? यदि तुम्हें बेसिकली एटा वुमेन स्पेस वुमेन मेंबर थी तांको पाई इम्पोर्टेंट what are the factors that change the role of women in today's optional अच्छी जे पड़ी थी what are the factors involved in influencing the crime what are the factors involved in influencing crime now, what is the purpose of interpersonal communication interpersonal intrapersonal या purpose कौन important no what are the different type of research possible what is the difference between subculture and counterculture what is the difference between subculture and counter what kind of impact is being given by social devaluation what are the different
components of culture. How social relation affect the individual relationship one another. Social relationship individual relation को affect करे. ता उपरे similarly last pages, last two words, last 2 3 pages. What are the disadvantage of living in counter culture? So actually these are the same culture subculture ର basically तुमर questions तारी रिलेटेड चलची बेसिकली कहीं से माने गोटे क्वेश्चन पचार देकी से रही जाते ताकू फेर पुनी लीड क्वेश्चन थाए तुम आंसर रे अनुसार किसी एडवांटेज ऑफ लिविंग काउंटर देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज हैविंग टू मच ऑफ फ्रीडम सेही ता सहित लिंक अछि टू मच ऑफ फ्रीडम तार डिसएडवांटेज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी दैट इज डिफाइंड सोशली ता ऊपर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मलिज्म main function of formalism how to manage the problems occurring in contemporary culture पूरा देखो से कल्चर ऊपर ही रहिला क्वेश्चन तो यही टॉपिक पूरा ता ऊपर कहने या ऊपर क्वेश्चंस नॉर्मली हमें डील करू मेजॉरिटी व्हाट इज हेजीमनी व्हाट इज कल्चरल ट्रेड्स हाउ साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी दिस बेसिकली फर्स्ट टॉपिक इन पेपर 1 रो and what are the trade involved in social reforms. What is conflict theory? The social conflict theory. Kaharo? Karl Marx ro. Na? Very important. And this is the last pages. What is Max Weber theory? ଏଇଥିରେ Max Weber ହୁଅନ୍ତୁ Durkheim ହୁଅନ୍ତୁ ମାର୍କ୍ସ ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଓରି ହେଇଗଲା ଫଙ୍କସନାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ପାର୍ସନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଲକଟ୍ ପାର୍ସନ୍ସ देन ये तुमर मैटन रॉबर्ट मैटन so are you feminist what does mean by feminist that is mean to very important then agent of social change any three या भीतर social change बहुत सारा अच्छी जोंटा कि explain the middle class is ever increasing in the country why is class so important for development very important sociology our economic angle middle class is ओजन नहीं ताऊपर तुमको कहया पड़ियो last one is sociological analysis of manual scale I think you know about manual sociological analysis of manual. So these are 50 questions थिला जोंटा कि तुम्हें 50 क्वेश्चंस थिला जोंटा कि तुम्हें देखि पारिबो ट्राई टू राइट इट डाउन एवं फॉलो कर जत्ते भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पिला जे भी आगु पढिया चाहूचो जे इंटरव्यू देवा पई चाहूचो सी ताकू एबे लेखिकी एबे सब करो एवं जे आगु को पढिया चाहूचो ता पई भी ये वीडियो सेव कर देथिबो तुम सांग साथी सहित समस्त शेयर कर देथिबो तो समस्त बेनिफिट हेबे ओनली यू हैव इन योर हैंड नाउ जो माने इंटरव्यू दोचंदी यू डू योर बेस्ट यू डू प्रिपेयर योर बेस्ट एंड रेस्ट दैट्स द विन मोर जितिबा मोर मार्क यू कैन नॉट डिसाइड बहुत भल इंटरव्यू है कि बहुत खराब मार्क भी आसुची तो ता उपरे मार्क्स हो उपरे सिलेक्शन उपरे बिल्कुल फोकस है तुम हाथ जहाँ अच्छी से मैक्सिमम पॉसिबल वे तुमको हेल्प कर तो समको ट्राई कर कि जहाँ भी तुमको पॉसिबल अच्छी से बेस्ट वे दब तो से मुझे डू योर बेस्ट एंड दैट्स द विन डू योर बेस्ट दैट्स द विन मैं तुम तरफ जी दिन अच्छी गिव इट बेस्ट दैट्स विन ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ୱିନ୍
जदि तुमे बेस्ट देई पाला तुमे प्रॉपरली टाइम को इफेक्टिवली यूज कला और प्रॉपर चैनलाइज वे प्रॉपर मु काली आ गोटे वीडियो छाड़ी जे कि समस्त स्पेसिफिक सोशियोलॉजी ऑप्शनल समस्त से भिडियोटा भी समस्त जाई देख से भिडियो एते सिस्टमेटिक वे मु बुझेइछि जो टॉपर्स रो कंपाइलेशन हो एंड किछि माने ताकू ऐड करिकि तार एक्सपीरियंस रे मोर एक्सपीरियंस भी बहुत लोकंकर एक्सपीरियंस को नेकी गुटे कंपाइलेशन है से भिडियोटा भी जाई देखन कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू फॉर पीसी राइट देन तो ये सोशियोलॉजी रे एटा देखंतो देन आगो को आउरी मु सोशियोलॉजी रे एई सब इश्यूज ऊपरे कि ठीक आनी that's it for now then let's meet thank you guys god bless you all jai jagannath namaskar